जीपीटी पे जाइए एंड जैसे कंपनी की कॉन्फ्रेंस कॉल्स हर क्वार्टर के बाद होती हैं, जस्ट टेक द ट्रांसक्रिप्ट्स एंड लास्ट 7 to 8 ट्रांसक्रिप्ट्स उस पर डाल दो. मतलब जैसे अगर आज FY25 में अगर मैं Q2 Q4 की डाल दूंगा, FY24 की Q2 Q4 की डाल दूंगा, ऐसे करते करते लास्ट 4 years की मैं कॉन्फ्रेंस कॉल्स अपलोड कर दूंगा. देन आई विल गिव अ प्रॉम्प्ट, अ रोल एंड अ कॉन्टेक्स्ट. तो रोल क्या है पहले कि आई विल गिव जीपीटी अ रोल दैट यू आर अ वर्ल्ड क्लास इक्विटी एनालिस्ट हु स्पेशलाइजेस in detecting whether the management is walking the talk or not. तो ये तो हमने पहले रोल दे दिया. फिर कॉन्टेक्स्ट दूंगा कि आई एम अटैचिंग द रिपोर्ट्स ऑफ सो एंड सो कंपनी बिलो. दीज आर द कॉन्फ्रेंस कॉल्स दैट द कंपनी हैज डन ओवर द लास्ट 4 years. राइट. एंड प्रॉम्प्ट क्या आएगा? यू हैव टू मेक अ डिटेल्ड टेबल which depicts whether the management has walked the talk or not. You can use color coding or a ranking framework. Wow. और color coding में just write कि green, red और yellow color. Right? Wherever they have achieved the guidance, give a green color. Wherever they have missed the guidance, give a red color. Wherever they have somewhat achieved and somewhat missed, give a yellow color. तो वो green, yellow, red light framework में it will give you entire table with all the guidances of the last 8 those particular conference calls. And आपको एक idea लग जाएगा whether this management walks their talk or not. Wow. So that's also a wonderful usage of GPT.